Namaskar everyone, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. You are watching us on eVidya channels, yes, channel number 6 and from 6 to 12. You're also watching us on our YouTube channel, which is NCERT Official. And we would like to tell you that this is our special session where we talk about cyber security. Yes, this is an online training program and we provide you 5 hours of training, that is 1 hour for each day. And this week, we are providing training to you all on Internet of Things and mobile security. Well, that's a broad topic under which we are, having training sessions. This session started on 4th of September and today is the 4th day. And today we have a very important topic that we are going to take up in this session, and that is, of course, about mobile security threats and what are the preventive measures. So we'll talk about that, but before we do that, I want you all to be introduced to our experts to have a discussion on this very important topic, which is mobile security threats and safety measures, and to impart us with the necessary knowledge and information on the same. We have in the studio Mr. Shinku Saran Singh. He's Deputy Commandant from I4C, that is Indian Cybercrime Coordination Center under Ministry of Home Affairs. Welcome to the studio, sir. Welcome, namaskar. We also have another guest with us. We have with us Dr. Deepak Kumar. He is Senior Cyber Intelligence and Digital Forensic Professional from I4C MHA. Welcome to the studio, sir. Thank you, ma'am. And we would like to tell you that this training session is organized by CIET NCERT in collaboration with I4C under Ministry of Home Affairs. So without investing any more time in this introduction, let me tell you very quickly about our telephone numbers and the ways through which you can reach us. You can call us on 8800440559. That's the phone number through which you can reach us. And we also have an email ID for you where you can drop your questions. You can send us your feedback and suggestions. The email ID is training.helpdesk@ciet.nic.in. So let's start this session in a while, but before that, here is a very important announcement to make, and that concerns all of us. This is regarding India's G20 presidency. Well, we are proud of the fact that India has assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, while manifesting the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one big family. And on this beautiful note, let's start today's training session. Let me tell you the topic once again. The topic for today's session is mobile security, threats and safety measures. So let's start the session, and we all know how important mobile has become these days, and what all it's doing for us. It's a boon and bane, but yes, we have to be secure against all the threats. So how to go about it, sir? Please. First of all, I would just like to start with the earlier trends which we were watching in cybercrime. Earlier, the fraudster were calling people and getting the OTP for financial transactions, Right. for calling people to make payment through UPI on the name of getting the payment through selling something on OLX platform and calling them that we will pay you, and then they ask to click on pay. So these all social engineering were done through calling, through wishing, you can say. But now they have shifted from wishing to mobile applications. Okay. You might be getting information from the people that we have not shared any Yes. OTP, Yes. and still we have duped by the fraudsters, and we have lost so much of money. So why this is happening? This is happening because these fraudsters have changed their modus operandi, and now they have shifted to mobile applications. Okay. So these mobile, how they are getting these information through mobile applications, as informed by various
channels that now the threat actors are using newly discovered SendStrike spyware and delivered via malicious VPN applications to target Android users. Meta has also uncovered 400 malicious applications on Android and iOS platforms through which fraudsters are stealing Facebook users' information through malicious apps downloaded from apps and Google software stores, application stores. That Mac 2.0 banking Android Trojan that is also used for stealing accounts information, wallets information from 467 applications. Experts also uncovered that 85 applications with 13 million downloads. That's a huge number. Yes. These applications are stealing application informations and involved in ad fraud schemes. And that's a pathetic scenario because we are a country where we are using mobile phones really heavily, and we are under this threat. So I'm sure there is a way out. Yeah, definitely. Where in India, people are using smartphones for day-to-day works, Yes. for making payments, for sharing informations, for connecting people Yes. to each other. So, and even people in remote areas who are not very much literate, but they are using the smartphones, and fraudsters are just taking advantage of these scenario, and they are stealing the people's information. Yes. They just use various applications, applications like OLX application, the social media application like Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. So they are sharing the links, phishing links through these applications. Even they are using SMS for sharing these links, and by using they are getting the mobile. The first step is to get the mobile number, the contact details of victim. They start from this step, and after getting the contact detail, they share various SMS through even through SMS headers which look like a very genuine SMS from banks or from other institution. So they share these links on the victim's mobile phones, and then when they click on these links, they get installed some malicious applications in their mobile phone, and as I told that these spyware malicious applications, they steal information from the mobile phone. Even they completely take over the mobile phone, and even some applications are just SMS forwarder application. They forward the SMS in which there maybe the OTPs are there in those SMS. So they get the information from these applications which are installed maliciously in the mobile phones by clicking those links. Okay. So even some fake e-commerce websites are there. They genuinely look like some famous e-commerce platforms. By tweaking some later, like in Amazon, they may replace A by E or E by A. So they these websites, these links will look genuine, and we generally do not see it very cautiously, Minutely, that yes. minutely that these are genuine websites, genuine links. So through these fake e-commerce websites, e-commerce links, they share the information. They are reaching the people through various social media platforms like WhatsApp, Telegrams. They are reaching the people and getting these malicious applications installed in their mobile phones, and they then they start getting the complete information which is being shared on these mobile phones. Right. So the latest modus operandi, the latest methodology of these fraudsters are
luring people through giving instant loan, especially after the COVID pandemic where people lost their job. They started offering instant loan because people were in need of urgent money, the small amount, not very big amount they need. They were in need of 20,000 or 40,000 or Yes. 50,000. So these loan apps started giving loan through digital platforms, and once the victim installed these Fraudulent apps. fraudulent loan apps, Right. they just get the permission of accessing these phones, and then they start harassing people, and they are charging very high interest rates. Apart from that, when people were in lockdown in their homes, they start sharing messages for work from home. Even then they shifted to electric bills frauds. Then there are so these by these methodologies, they are luring people to click on the links to share these details. So, and they are getting access of their mobile phones. So these are the methodologies through which they are just duping the people. So you can broadly categorize those apps in these following categories, like loan app, even dating apps, gaming apps. The students and children, they are just downloading the gaming app through some unauthorized websites, like third-party websites. They are not downloading it from Apple Store or Google Store. So these gaming app may carry some malicious applications behind, and they just to take over the whole mobile phone. Right. So screen sharing applications are there, remote access applications are there, on the name of COVID-19 applications, e-shopping applications, social media applications are there. So these through these apps, they are just getting the details, they are getting the malicious links installed in the phones, and just getting all the details which is being shared by the mobiles. Also, there is a problem that these days, if you want to use any app, it asks for permission. Unless and until you grant a permission, you won't be able to use the app. So that's also, an intrusion to the privacy, I would say. Definitely, many times we are very ignorant about these permissions. We just give just click on allow, Yes. allow. We are not seeing that whether these application has to do something with the contacts. Right. These applications has to do something with our camera. Whether they required to get the permission to access gallery. So we are even any application which is managing our contacts, which is managing our call logs. Yes. We are giving permission of gallery also to them, and through these permissions, they are accessing all these data of our mobile phones. Right, right. So now I think Mr. Deepak will explain how these applications are working in our phone, and what permissions they are getting, whether they are asking for permission. Many applications they are not asking for permission, and they are just by installing them we accept the terms and conditions. And in the terms and conditions itself, it was mentioned that these application will access your these applications. Yeah. So Mr. Deepak will explain it. Thank you. Thank you, sir. Thank you for explaining in a very brief manner about exactly how mobile applications are working. And the topic is really important. So we have taken some cases here. हमने कुछ केस ले रखे हैं, कुछ इंसिडेंट्स ले रखे हैं रियल सिनेरियो में, ताकि यूज़र समझ सके एग्जैक्टली कि अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या मोबाइल थ्रेट्स है तो हम उससे कैसे बच सकें, एंड स्पेसिफिकली लाइक व्हाट आर दोज थ्रेट्स. सो in front of you, you have like one screen where you have mentioned about the loan frauds. So loan application based frauds are very common because जब से कोविड हुआ, कोविड के बाद से यह फाइनेंशियल फ्रॉड में इस माध्यम से ज़्यादा केसेस और क्राइम्स इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जी. पोर्टल में भी और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में भी, जहाँ पर लोग पैसे के लिए बैंक जाते थे या फिर ऑनलाइन सर्च करते थे. तो यूज़र का एक सिंपल उदाहरण होता है, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल. Right. मोबाइल में दे ट्राई टू कनेक्ट, दे ट्राई टू कॉल पीपल, दे ट्राई टू मेक
इन्फॉर्मेशन दैट कि हमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं। Yes. और उन्हें लगता है कि हमें अगर कुछ कंटेंट मोबाइल पे मिलता है, सर्च इंजन गूगल पे मिलता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो चीज़ें सही हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि शायद वो गलत भी हो सकती हैं। और असली जड़ जो होती है प्रॉब्लम की, वो यहीं से शुरू होती है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोन एप्लीकेशन बेस्ड फ्रॉड में जो फ्यूचर में जब आते हैं, जो आप जो बाएं साइड में देख रहे हैं, जैसे लिखा है कैश लोन एप्लीकेशन, एक एग्जांपल दिया गया है। ऐसे काफ़ी एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, आते भी हैं, चले भी जाते हैं, टाइम बिंग रहते हैं। तो लोग जब इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अक्सर यह एप्लीकेशन, एक सिंपल भाषा में समझिए कि फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और उसके जो यूज़र इंटरफेस है बिल्कुल कॉमन होती है, लगता है कि एकदम से क्लियर है। सिमिलरली जो परमिशंस मांगी जाती है कैमरे की या फिर आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो बड़ा कॉमन सा एक नॉमेनक्लेचर वो यूज़ करते हैं। और मेजर पॉइंट यहाँ पे है कि वह अक्सर यही ल्यूर करते हैं कि व्यक्ति मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले जी। और चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे वो व्हाट्सएप का माध्यम हो, चाहे वो वेबसाइट का माध्यम हो, चाहे वो कोई भी एक लेजिट प्लेटफॉर्म हो। सो दे आर कमिंग थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म। आई हैड वी जस्ट फोकस अबाउट कि जैसे हम समझते हैं कि एंड्रॉयड प्ले स्टोर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, थर्ड पार्टी क्या है। सो यूजुअली वी हैविंग अंडरस्टैंड कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं मोबाइल एप्लीकेशन के, एप्लीकेशन हो चाहे वो थर्ड पार्टी प्ले स्टोर हो, तो हम कैटेगराइज करके समझाने की कोशिश की कि जैसे मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, लूडो ऐप। अब लूडो ऐप आप सर्च करेंगे एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल प्लेटफॉर्म में, तो आपको काफ़ी लूडो जैसी चीज़ें मिलेंगी। राइट। कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जैसे हमने सर्च किया। अब आप समझिए कि इसमें हम कैसे समझें कि विच इज़ रियल। राइट। और आगे बढ़ते हैं तो हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे पहला था लूडो किंग करके, तो हमने एक लूडो किंग पे क्लिक किया। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन एक समझाने के लिए है, एक एग्जांपल के लिए है, आप खुद समझेंगे और आप खुद समझ पाएंगे कि अच्छा आगे से हमें कैसे अवेयरनेस मेंटेन करनी है। सो व्हेन यू सी द फर्स्ट वन इज अबाउट दिस लूडो किंग, यू सी द डेवलपर इज देयर। आप साइड में देखेंगे नीचे वेबसाइट का नाम क्या है, इसकी ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। इससे क्लियर दिख रहा है कि वेबसाइट प्रॉपर्ली है, ईमेल भी है, एड्रेस भी समहाउ दिया गया है, तो कुछ हद तक इसकी इन्फॉर्मेशन सही लग रही है। लोग उसका रिव्यू भी चेक करते हैं, रेटिंग भी चेक करते हैं कि 1 रेटिंग है कि 5 रेटिंग है या किस तरह की रेटिंग्स है। दूसरा देखिए, जैसे डिफरेंट एप्लीकेशन इज दैट वेयर यू हैव सम डिफरेंट लूडो, तो आप देखेंगे इसका ईमेल आईडी बड़ा अजीब सा है, जीमेल में ब्लड फॉरेस्ट 9 समथिंग, एंड यू सी द एड्रेस इज सम रैंडम बीजिंग एंड ऑल, प्राइवेसी इज अगेन सम डिफरेंट वेबसाइट। सो आप समझिए कि जब ईमेल क्लियरली नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉपर्ली नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी के अलावा रिव्यूज और रेटिंग्स भी क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है, आज के परिवेश में लोग रिव्यू भी 5 रेटिंग दिलवा देते हैं कि दोस्त भाई को भेजा और कहा कि यार आप इसको प्लीज 5 रेटिंग कर दीजिए, तो लोग नेगेटिव कमेंट जब पॉजिटिव दे देते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है। तो हमें मल्टीपल पैरामीटर्स अगर यूजर अपने लेवल पे चेक कर ले तो शायद वो इस तरह के फर्जी एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड नहीं करेगा। और सर प्ले स्टोर पे एक ऑप्शन भी आता है, लिखा आता है इट्स वेरीफाइड, वो भी आई थिंक देखना बहुत जरूरी है। देखिए, वेरीफाइड चीज़ें 2 चीज़ों पर निर्भर करती हैं। कोई भी एप्लीकेशन, उसका कोड जो होता है, कोड अगर सस्पिशियस है, कुछ कोड हमारे लिए सस्पिशियस हो सकते हैं, कुछ कोड किसी और कंट्री के लिए सस्पिशियस नहीं हो सकते। तो मान लीजिए अगर हमारे कंट्री का डेटा अगर किसी और कंट्री में जाता है तो हमारे लिए वो एक प्राइवेसी का पॉइंट है। पर वो दूसरे कंट्री में अगर जा रहा है तो उसके लिए उसको सस्पिशियस एंगल और प्ले प्रोटेक्ट और इस तरह की ग्रीन चीज़ों पर अगर हम खुद अवेयर हो तो समझें। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि गूगल प्ले स्टोर में भी ऐसे ऐप्स आती हैं जहाँ पर इट कुड बी एनी प्लेटफॉर्म। तो एग्जाम्पल गूगल का दिया है क्योंकि गूगल के भी काफ़ी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे ऐसी एनालिसिस आई है कि गूगल प्ले स्टोर में भी ऐसी एप्लीकेशंस थी जहाँ पे लोगों ने इंस्टॉल किया और उनकी एप्लीकेशंस हैक हुई, मतलब उनका डेटा चला गया। फिर बाद में एप्लीकेशन गूगल ने टेक डाउन भी किया इमीडिएट रिस्पॉन्स पे। तो दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉर द सेम थिंग। तो मेरा ये कहना है कि एप्लीकेशन अगर आप समझते हैं कि मोबाइल प्ले स्टोर में हो या थर्ड पार्टी में है, तो हमारा जो डेटा है, हमारा डेटा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्टैक्ट। अगर हमारा कॉन्टैक्ट इस माध्यम से हैकर या कोई भी डेवलपर ले लेता है, उसका मिसयूज़ करता है, तो वह मिसयूज़ के बाद वह आपके कॉन्टैक्ट के माध्यम से आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को मैसेज कर सकता है कि मिस्टर दीपक कुमार आपके टीचर ये हैं या फिर आपके दोस्त ये हैं। तो माय फ्रेंड विल से कि यार इसको मेरा नंबर कैसे मिल गया, एंड यू सरप्राइज। पर यह तो पुराना पॉइंट है। जो नया जो हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं वो है एसएमएस। जब एसएमएस की परमिशन आपका ले लेगा कोई एप्लीकेशन, तो आप समझिए कि हैकर आपको कॉल नहीं करेगा। वो आपसे नहीं पूछेगा कि हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक और सर मैडम आप एक हॉलीडे ट्रिप पे जाना चाहते हो। वह सिंपल है कि वह रिमोटली आपके एप्लीकेशन को, आपके मोबाइल को एक्सेस कर चुका है। रात को 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे आपके जानकारी के बिना वो अगर कुछ ट्रांजेक्शन करता है
और ट्रांजेक्शन के बाद अगर उसको OTP मिलता है वो OTP यूज़ कर सकता है। sure. सिर्फ OTP तो एक पॉइंट होता है जो ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करता है किसी व्यक्ति के लिए कि हाँ उसके द्वारा वह OTP शेयर किया गया। राइट। पर मुद्दा यहाँ पे यह है कि जब एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन के माध्यम से SMS चला गया और उस यूज़र ने रिमोटली उस SMS को डिलीट किया, जो भी किया, या उस रियल यूज़र को पता भी नहीं चला, तो रियल यूज़र यही बोलता है कि सर मैडम हमने कुछ भी शेयर नहीं किया। राइट। और ये चीज़ें बाद में निकलती हैं जब कभी थॉरो फॉरेंसिक एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि तब बैंक्स बोलते हैं यस हमने तो SMS भेजा था, हमने ईमेल भी किया था। तो सारे पॉइंट्स हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए एक स्क्रीन में जैसे बेटिंग एप्लीकेशन की बात की जा रही है। गैम्बलिंग बेटिंग एप्लीकेशन सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करती हैं। कुछ स्टेट में ऑनलाइन गैम्बलिंग के कुछ जैसे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि जैसे एप्लीकेशन है इसका डेवलपर कौन है। तो जैसे एप्लीकेशन का URL है play.google.something करके, राइट। दूसरा इसका नाम है SI बेटिंग टिप्स करके, एंड सिमिलरली वी हैव डेवलपर। थोड़ा नीचे जाते हैं, वी हैव ईमेल ID, एड्रेस एंड प्रीवियसली थिंग्स। तो आप समझिए कि अगर कभी भी कोई ऐड आता है वह सही गलत हम डिफाइन नहीं कर सकते यूजुअली, क्योंकि अगर हमारी क्षमता किसी चीज़ में इतना पैसे लगाने की है और फिर हम लुट जाते हैं, फिर हम जाते हैं पुलिस के पास या किसी अथॉरिटी के पास कि हमने यहाँ पैसे लगाया, तो जब पहले ही आप ग्रीड में फंस रहे हैं तो आप फिर ब्लेम मत कीजिए कि हम इस चीज़ में फंसे, क्योंकि यह एप्लीकेशन हो सकता है कि इंडिया सरफेस, इंडिया क्लाउड, इंडिया डेटा सेंटर, इंडिया प्रेमाइस या इंडिया ज्यूरिडिक्शन पे ना हो। उस केस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। आपको ऐसे SMS हमेशा मिलते होंगे जहाँ पे कहा जाता है कि डियर कस्टमर योर SBI बैंक अकाउंट KYC हैज बीन एक्सपायर्ड। आप खुद समझिए कि अगर बैंक है तो हमें जानेगा डियर दीपक कुमार, डियर XYZ, पर डियर कस्टमर में एक चीज़ तो यहाँ पे क्यों क्लैरिफाई नहीं है, क्या है वो रैंडमली मैसेज शूट किए पड़ा है। दूसरा उसमें आप लिंक देख पा रहे हैं, एक ऐसा URL है जो एक नीले रंग में है, that is hyperlink, and when you see the URL, when you read URL, that is called redeempoints.co.in। मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ HDFC के नीचे जो है, और नो डाउट ये HDFC ही नहीं सारे बैंक्स का लोगो यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए यह रियल बैंक से कनेक्टेड नहीं है। रियल बैंक को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सिमिलरली उसी टाइम पे वो कोशिश करते हैं उसको टेक डाउन करने के लिए। बट हमारा मेथड यहाँ पे है कि अगर ऐसा कोई SMS आता है, अगर हम इस मैसेज की गहराई पे जाएं तो हमें लगता है कि मेरा KYC खत्म होने वाला है, मैं डर चुका हूँ, मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। लिंक पे क्लिक करने के बाद इंटरनली कुछ ऐसा होता है, बट आपको सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। राइट। व्हेन यू क्लिक द लिंक इट ओपन्स लाइक इट मे आस्क कि आप वेबसाइट खुलेगी कोई, या तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। अब आप खुद देखिए सामने जो एप्लीकेशन जो URL है, यानी जो यूज़र इंटरफेस दिख रहा है, आप एक मतलब पॉइंट में आप ये नहीं कह सकते कि ये फेक है, पर दिस इज अ फेक। it's alike same to same ICICI bank, and similarly it asking for the username, PAN card detail, everything. So one angle is here where user unknowingly giving information. This is one level of hacker who harvests the information. Then second level maybe in future he will say that कि आपने ये करना है वो करना है, क्योंकि उसको डेटा मिल चुका है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, OTP चाहिए। तो this is one method called credential harvesting. And very simple tactics generally they are using to collect and manipulate in different mean. तो यहाँ मैंने बैंक एग्जाम्पल लिया है। क्या पता आप न्यूज़ पढ़ते हो, आप न्यूज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करते होगे, क्या पता आप बच्चों के होमवर्क कराने के लिए कुछ डिक्शनरी डाउनलोड करते होगे, क्या पता आप ट्रेडिंग के लिए कुछ मार्केट के एप्लीकेशन, इट कुड बी इन एनी मैनर। तो आप मुझे बताइए कोई एप्लीकेशन उसका नाम है ब्यूटी कैम। अब ब्यूटी कैम करता क्या है, वह आपकी इमेज को एडिट करता है। तो इमेज एडिट अगर करना है तो वह एप्लीकेशन अक्सर कैमरे की परमिशन लेगी। तो लीगली वो सही है, पर उस मेथड से, उस परमिशन से क्या पता हुआ जो डेटा गैलरी का एक्सेस ले रही है साथ में और परमिशन जो ले रही है उसका वो मिसयूज भी कर सकती है। राइट। So sometimes here understanding in a very precious and very simplest manner that the misuse of this application, the permission, they are very dangerous. And now you see the next level. So thoroughly यह जो स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि बैकएंड में ये परमिशन जब लेती है तो कुछ ऐसे UI आते हैं, यूजर इंटरफेस, और अक्सर आदमी सोचता है कि रियल है। एक और एग्जांपल है इनकम टैक्स को देखते हुए, जैसे इनकम टैक्स हो गए, कोविड के टाइम पे आप देखिए कि वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, तो उस टाइम काफ़ी ऐसे आता था कि आप इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए। राइट। सो यू सी दिस एग्जाम्पल व्हेन द लोगो दे आर यूजिंग, the logo of our any politician, any government, any private, anything they can use, who is a famous figure. So you usually think यार ये famous figure इसमें है तो ये सही ही होगा, authentic होगा।
हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे आधार पैन नंबर मांगा गया है, मोबाइल नंबर मांगा गया है, एंड सिमिलरली आस्किंग फॉर SMS ऐप परमिशन, द लास्ट ऑप्शन. So when you allow SMS read permission, then you see your contact, your calendar, your location, everything has gone there. Yes. And then you can't say that कि it is the issue of something, because somewhere हमारा एक खुद का दायित्व होता है इस चीज़ को समझने के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं. एंड वेरी लास्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से हियर, मोबाइल एप्लीकेशन हो या मोबाइल प्लेटफॉर्म हो, मोबाइल प्लेटफॉर्म में हम जब कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं. मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, दैट इज अर्न मनी ऑनलाइन. और अगर मैं इस तरह के कुछ भी अर्न मनी ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन जॉब सर्च करता हूं तो जो मुझे रिजल्ट आते हैं उसमें अगर आप देख सकते हैं बगल में AD लिखा है, इट्स मीन दैट स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट बेस्ड थिंग्स. सो अगर हम इस पहले लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसा लिंक आता है सामने, लाइक दिस. व्हेन यू ओपन दिस, इट आस्किंग फॉर डू ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क एट होम, एंड वी हैव सी द व्हाट्सएप. बट इससे पहले हम कुछ समझते हैं कि इसकी गहराई क्या है. तो हमने इस URL के बगल में व्हेन यू हैव ड्रॉप डाउन बटन, व्हेन वी क्लिक वी हैव कि यह ऐड ये बेसिकली किस कंट्री से पॉपुलेट हो रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है साफ साफ फ्रॉम हांगकांग. आई एम नॉट पॉइंटिंग सम कंट्री इटसेल्फ, बट स्टिल इट्स नॉट इन इंडिया. अगर किसी और कंट्री में है और अगर उस कंट्री के साथ हमारा कुछ कम्युनिकेशन है लीगल मैनर में, एमलेट मैनर में, सो दे कैन प्रोवाइड, दे आर लाइबल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. बट सम टाइम इफ दे आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर this custody or this data privacy perspective, then Right. it's a question to us. Yes. So somehow it's our liability as well. When you search something, you should verify. Even though you are trusting this platform, but you have to verify, because when you click the link goes here. And when this link goes here, when you click this WhatsApp button, the green button, then it opens like this. And when it's open like this, then you start chatting with them. And when you start chatting with them, it could be he, it could be she, it could be a team, it could be Right. organized crime. It could be a big cartel. You don't know exactly these number operating from here in India. It could be in different place. Yes. So sometime when you see the user, the pic, basically we are seeing a girl is there. It's a very common tactics. If any image of any something like female perspective, usual people try to respond in a very Yes. clear manner. अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अब नंबर देखिए. Here Deepak, that's because for the information of our viewers, I would like just add one thing, that Indian number starts from +91. That's right. Apart from that, every number is a foreign number. So when you are clicking on this WhatsApp logo and you are getting other number other than starting from +91, that must be from a foreigner's number, and it is used for stealing your data. Right. बिल्कुल. सो एग्जाम्पल यही है, +27 है या +63 है, बट ये +91 नहीं है. +92 में आते हैं. आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति. मैं पूछना चाहूँगा व्यूअर से, अगर कोई भी है कमेंट में बता दे जिसने ऐसे मैसेज पे उसके पैसे मिले हों, उसने रिस्पॉन्ड भी किया हो. सो सम टाइम दिस इज़ वेरी कॉमन कि वी अंडरस्टैंड क्या है. अब देखिए, यह जो ऐड है, यह जो एडवर्टीजमेंट है, यह एक एडवर्टीजमेंट नहीं, यह मल्टीपल एड्स निकालता है. Right. हर तरह के. अब मान लीजिए मुझे फ़ोन स्कैनर चाहिए. सो वी हैव फ़ोन स्कैनर based application, that is called second number. If you want to search about Tapcoin, some cryptocurrency perspective. So we have all the interest perspective of ads with the same digital marketing company which is there. Right. It could be anyone. If they are using the same thing for any malicious purpose or any crime perspective, then who are responsible? Initially, the data is there, but the first user, the end user is us. Simply, we have to understand exactly what is there. Yes. So, जो point था समझाने के लिए लास्ट एग्जाम्पल्स में, सबसे पहला यही था कि हमें जो एप्लीकेशन मिल रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म है क्या. हमने प्लेटफॉर्म देखा, दैट प्लेटफॉर्म इज बेसिकली गूगल, दैट प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर, दैट प्लेटफॉर्म आईफोन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, different things are there. But sometime people are using mod application, क्रैक एप्लीकेशन, कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आते हैं. Right. दैट इज कॉल्ड लाइक टेलीग्राम, इट्स कॉल्ड व्हाट्सएप. अब बताइए, कोई एप्लीकेशन अगर उस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उस एप्लीकेशन को आप विदाउट वेरीफाई इंस्टॉल कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि वो क्या है, Right. तो आपसे कहाँ रिपोर्ट करेंगे. तो पहले ये जानिए कि वो एप्लीकेशन किस यूज़र ने भेजा है, क्या चाहता है एग्जैक्टली वो, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद जब आपका डेटा चला जाएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल किसको करेंगे. बिल्कुल. तो दैट इज द फंडामेंटल विच आई हैव सेड एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग. द सेकंड पॉइंट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द परमिशन. अब आप देखिए कि कैलकुलेटर है. अब कैलकुलेटर अगर आपसे कैमरा की परमिशन मांगता है तो आप सोचिए माइंड में कि Doesn't make why- any sense. Yes. Exactly. Similarly, when any application which is not linked with their permission, then why are you giving this all?
It's not important. Yes. So that is about the application part. Here we are talking now why it is very important. Important why? Because mobile is okay, but mobile application is the medium. Right. So mobile application से ही कोई भी यूज़र इंटरनेशनली नेशनली कनेक्ट हो सकता है. और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहाँ पर हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमारा फ़ोन कम्प्लीटली कंप्रोमाइज़ हो सकता है. हमारी पर्सनल चैट्स, पर्सनल कंटेंट, पर्सनल कॉन्टैक्ट वो भी मिसयूज़ की जा सकती हैं. और ज़रूरी नहीं कि उसका एग्जाम्पल, उसका जो रिजल्ट है वो तुरंत दिखे, कल दिखे, परसों. इट कुड बी आफ्टर 3 months, इट कुड बी आफ्टर 4 months. लोग के फ़ोन टूट जाते हैं, स्क्रीन चेंज कराने जाते हैं शॉप्स में, दे गिव देयर थिंग्स कि मेरा पैटर्न लॉक ये है. वो उन्हें नहीं पता कि वो शॉप में पैटर्न लॉक जब ऑन करेगा तो इट्स वेरी सिंपल ऑप्शन कॉल्ड गैलरी. ही कैन गो टू गैलरी, ही कैन सी. कुछ लोग ठीक है गैलरी लॉक यूज करते हैं, पर कुछ लोग के पासवर्ड्स बड़े वीक होते हैं. वेरी फंडामेंटल थिंग्स आर देयर जहाँ पे चीज़ें लीक होती हैं. So now this is the example which I have shown you, from Ludo to betting application to the SMS to these things. And now the main point here is about URL. अब समझना कैसे है. हमने कुछ काउंटर मेजर्स भी दे रखे हैं आपको इस सेशन, इस स्लाइड के एंड में. काउंटर मेजर में सबसे पहला काउंटर मेजर होता है आपका खुद का दिमाग, आपका खुद का कॉमन सेंस. आप खुद समझिए कि कोई अगर लालच आपको दे रहा है, कोई बोलता है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको पैसे डबल हो जाएंगे, आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखाता है जहाँ पे लगता है कि काफ़ी ग्राफ हाई हो रहा है. हम नहीं समझ पाते कि वो ग्राफ जो है वो मैनिपुलेट भी की जा सकती है, कोई भी डेवलप कर सकता है. इट्स वेरी कॉमन. वो कह सकता है कि आप सर्विस को लेने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. सो इट कुड बी एनीथिंग. वी हैव टू वेरी केयरफुल. URL दिया है. URL मतलब होता है वेबसाइट का एड्रेस. उस वेबसाइट पे आप अनोइंगली क्लिक मत कीजिए. क्या पता क्लिक करने पे कुछ चीज़ डाउनलोड हो जाए. बहुत लोग डाउनलोड करने के बाद ऐप्स को डिलीट या अनइंस्टॉल नहीं करते हैं. सो दैट इज़ वन अनदर मेजर प्रॉब्लम. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल काउंटर मेजर हियर. सो पहला पॉइंट यहाँ पे यह है कि मोबाइल बेस्ड मैलवेयर्स, ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, और वह बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं जहां पर वह स्टार्ट होते हैं फेक नंबर से. तो आपके मोबाइल पे कोई अगर SMS आता है, इट कुड बी AB-ABCD, दैट इज SMS हेडर्स. इट कुड बी फ्रॉम सम नंबर. सो चाहे नंबर हो चाहे SMS शॉर्ट कोड हो, वो किसी न किसी नंबर से लिंक है. आप जब कभी रिपोर्ट करते हैं तो आप सिर्फ मैसेज कंटेंट को रिपोर्ट मत कीजिए, यह मैसेज किसके द्वारा भेजा गया है यह भी रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज इट्स लिंक दैट कि वह कौन सेंडर है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने एक स्लाइड में दिखाने की कोशिश की थी, जो बेसिकली यह है. आप जब लिंक पे क्लिक करते हैं, आप ध्यान से देखिए, जब मैं tinyurl.com/ICICI team1 पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो वेबसाइट है या जो मेरा जो लिंक है वो जाके नीचे यानी जो ICKU.fx.something.apk में गया है. यह बताना ये चाह रहा है कि एक हैकर ने, एक फ्रॉडस्टर ने जो नंबर यूज़ किया है 898 समथिंग करके, जहाँ से मैसेज आया है, और जब क्लिक करवा करके जब वो APK डाउनलोड करवा रहा है, मतलब ये जो पूरा पैटर्न है यहाँ पे वो नंबर से लेके URL से लेकर जो लास्ट में APK फाइल है यानी एप्लीकेशन फाइल जो एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड पैकेज किट बेसिकली, यह कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेगी. तो यह जो सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल, वेबसाइट्स, नंबर्स, टेलको, हर तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं. तो हर जब पैटर्न को स्टडी किया जाता है तब मालूम होता है कि सिम किस नाम से इशू हुआ या वेबसाइट्स कैसी हुई. तो मोबाइल सिक्योरिटी में या फंडामेंटल डेटा जब आप कहीं रिपोर्ट करते हैं, जो हम बताएंगे लास्ट में कि रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म भी है, जब ये डेटा बनता है तब जाकर के मालूम होता है एग्जैक्टली कि क्राइम चीज़ें कैसी बढ़ रही हैं. सो ओवर टू द काउंटर मेजर पार्ट इन वेरी क्विक मैनर. 1, SMS कहाँ से आया, दैट इज़ वेरी क्लियर. SMS का URL दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग लिंक. SMS वायरस हो सकता है, वॉर्म्स हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये समझ लीजिए बेसिकली कि यह मैलिशियस एक सॉफ्टवेयर की बात की जा रही, जहाँ पर आदमी जब इन चीज़ों को यूज़ करता है अपने कंप्यूटर्स में या फिर मोबाइल पे, तो इट कुड बी क्रिएट सम इशू, इट कुड बी क्रिएट सम हार्म. your computer could be hacked, your application could not work, your mobile may be hang, your data could be go some wrong places, or maybe your the keylogger part, the adware part. Adware is like a एडवर्टीजमेंट, जो फेक एड्स नहीं आते, आप कोई लिंक पे जब क्लिक करते हो दिखाता है कि आपके फ़ोन की बैटरी कम है, आपके फ़ोन पे 5 वायरस मिले हैं, आप इसको क्लीन कीजिए. तो हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, और ऐसा होता है कि हमारा जो ब्राउज़र होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे भेज देता है कि हमारा फ़ोन OnePlus है, हमारा फ़ोन Redmi, ये कौन से ब्रांड का है. तो जब वो रिप्लाई आता है कि आपका Redmi ये सीरीज़ पे 5 वायरस मिले, तो आपको लगता है कि यह जो सर्विस प्रोवाइडर या जो एप्लीकेशन या मैलवेयर है या एडवेयर है
वो सही है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं और हम डाउनलोड कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दिस प्लेटफॉर्म, अक्सर हम जब इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, चाहे एडवेयर हो, हम इसी चीज़ों पे क्लिक करने के बाद ही हमारा जब मोबाइल कंप्रोमाइज़ होता है तभी हम शिकार वहीं से शुरू हो जाते हैं। सो 3 स्लाइड्स अगेन लास्ट ईयर। वायरस टोटल जैसी कुछ वेबसाइट है जो कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं, जहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि हम अगर कोई यूआरएल है, फेक यूआरएल, जैसे आपको एसएमएस में मिला था या कोई एप्लीकेशन था, आप इस वेबसाइट पे जाके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ रिजल्ट दिखाता है। मतलब कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म है, और यह एक एंटीवायरस नहीं, लगभग 60+ एंटीवायरस के माध्यम से आपको बता सकता है कि एग्जैक्टली वह फाइल सस्पिशियस है कि नहीं। तो आप एक लेवल तक यहीं सेफ हो जाते हैं। और दूसरी वेबसाइट भी है urlscan.io। यह स्कैन वेबसाइट्स भी जाकर के आप पब्लिकली अपलोड कर सकते हैं, और जहां पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यह यूआरएल किस कंट्री में होस्टेड है। तो थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है समझने के लिए। तो ये फंडामेंटल फ्री पॉइंटर्स हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एट द लास्ट, लाइक इन अवर सेशन वी हैव मेंशन्ड अबाउट साइबर दोस्त। साइबर दोस्त आई फोरसी दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो साइबर क्राइम के अवेयरनेस टिप्स, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में बताता है। साइबर दोस्त एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आए दिन साइबर क्राइम के जो नए ट्रेंड चल रहे हैं हम इस पे पोस्ट भी करते हैं। लोग अवेयर हो सकें, इसे फॉलो करें, इसको देखें, इस पे टिप्स भी रहती हैं, स्कैम के अलर्ट्स भी रहते हैं। G20 में होने वाले कुछ ऐसे फेक वेबसाइट्स बन रहे हैं या कुछ नैरेटिव चल रहा है जो साइबर क्राइम से संबंधित है, हम इस माध्यम से यहाँ पे पॉपुलेट भी करते हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू अवेयर एंड अपडेट एट दिस सिनेरियो। सो दैट इज़ वन, एंड द वेबसाइट कॉल्ड cybercrime.gov.in, जिसके बारे में सर ब्रीफ करेंगे कि वेबसाइट क्या है और क्या टोल फ्री नंबर है जो साइबर क्राइम मोबाइल रिलेटेड स्टफ से भी हमें बचा सकता है। ओवर टू यू सर। राइट, थैंक यू दीपक। आपको जो है मिस्टर दीपक ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई, जिससे कि आप किसी एप्लीकेशन को यू कैन गो ऑन द वेबसाइट लाइक वायरस टोटल and search that whether these applications are genuine, these website, this URL is genuine or not. Now when these were the preventive measures which you have to take before giving permission to the application, before downloading application. But once you are duped by the fraudster, your money has been taken away from your account, then the question is what to do. Where to go, whether we go to the police station and report it. But by the time you go to the police station and report it, by the police officials will start investigation on that. Your money will be taken out from the digital ecosystem of our digital banking system. So at first instance, there is a National Cybercrime Helpline number, that is 1930. I repeat, 1930, where you can call directly and report these cybercrime from anywhere in the country. Every state has its call center for taking these calls, and they are taking the calls and reporting, getting the details from you and reporting these complaints on NCRP portal, that is National Cybercrime Reporting Portal. Right. Or you can directly go on National Cybercrime Reporting Portal, that is www.cybercrime.gov.in, and you can report your complaint through any system. So these complaints, our website NCRP, National Cybercrime Reporting Portal, has integrated all the law enforcement agencies and more than 250 banks and other financial entities to take immediate action on your complaints. So if you report the complaint immediately after losing the money, these financial entities tries to hold the money within the digital ecosystem so that they can further return you the money. Because it is very difficult to trace out once this amount has been withdrawn from this the digital ecosystem.
and by using ATMs or any other POS system nowadays. For sure, very smart. They are using e-commerce platform and purchasing something by making payment from your credit card. So once you are cheated, you please report immediately on the complaint on this National Cybercrime Helpline number. That will save your money. And other complaints also, apart from these financial complaints, you can report other cyber crime also. So I will request all the viewers to in case of any cybercrime, please go on the website www.cybercrime.gov.in or call on National Cybercrime Helpline number 1930. Thank you. Right, so that was a very important discussion today, rather a very important training that we had on mobile security threats and safety measures. We talked about a lot of things. We discussed how these frauds happen and what are the areas where one needs to pay really close attention so as to avoid these threats, these, definitely these bad things happening to you, because you do not want to regret later, that this thing happened to me and I was not attentive enough. So it's very important to be aware, to be careful. You are using an application, make sure it's genuine, and go through all the parameters that we have discussed so far. What's the domain name, the address, the developer's name, and everything. Also, both our panelists showed you everything with examples with websites and how you can go about it and where you can report these threats. That's very important, because once you're duped and you are in a terrible position, you don't know where to go, what to do, and you are actually panicking. That's the place, that's the time where you have to retain your calm and composure, and you have to go to that website and lodge your complaint. And now it's time for me to wrap up this training session, but before we do that, I have to tell you about something which is very important, and that's the quiz thing. I think Dr. Deepak wants to share something with us. Exactly. So, very important thing would like to say, if people are using Android phone, there is an option called digital well-being. Digital well-being application आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में आप अपना मैक्सिमम समय कहाँ देते हैं, किस एप्लीकेशंस पे देते हैं. जैसे आप मोबाइल पे प्राइम देखते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम देखते हैं, या फिर आप मैसेज करते हैं, या फिर आप जो भी करते हैं. So maximum thing it can there, so that can tell you exactly कि आप इस डिवाइस पे, that is the device that is called digital thing, but I would say it's a digital bomb. It can do very good thing, it can do very wrong thing as well, the information which we are disseminating. So one, digital well-being they can use, and very few countermeasures I would like to add again here. Password is very important. Please put a proper passwords. You can change the password, you can put a proper that patterns. It should not be very simple O01L like this. Similarly, take a backup. अगर आपका फ़ोन आज गुम जाता है, आप खुद सोचिए कि आपका जो फोटोज़ हैं क्या वो कहीं पे सेव हैं. सेकेंड, आपका फ़ोन टूट जाता है, आप जब कभी शॉप में देने जाते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जैसा करना है. तीसरा, पासवर्ड के अलावा जो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं, अगर कोई यूज़र इजीली खोल के एप्लीकेशन पे जा करके देख सकता है कि आपने क्या मैसेज किया, क्या चैट किया, क्योंकि एप्लीकेशन गैलरी आपकी लॉक नहीं है, तो आप सेकेंड लेवल का भी परमिशन, सेकेंड लेवल का भी आप ऐसा पासवर्ड गैलरी लॉक रखिए ताकि आप उसमें यूज़र कैन नॉट बी एक्सेस इनटू द सेम थिंग. एंड थर्ड, अवॉइड शेयरिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट शेयरेबल. आप अपनी चीज़ें प्रिवेसी तक रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी चीज़ें वह व्यक्ति ही देख रहा है. कोई व्यक्ति भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से, या फिर जहाँ पे आपने प्रिवेसी पॉलिसी प्रॉपर्ली मेंशन नहीं की हुई है, वह भी देख सकता है और मिसयूज़ कर सकता है. चौथा, एम कवच करके गवर्नमेंट की ही एक एप्लीकेशन है, एम कवच करके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी है. और इसमें यह वेरीफाई कर सकते हैं कितनी एप्लीकेशन सस्पिशियस हैं. अननेसेसरी एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं जो सही नहीं है, क्योंकि गैलरी डेटा सारा कंज्यूम होता रहता है. आप जो एप्लीकेशन डेटा जो परमिशंस आपके उसके होते हैं जीपीएस के, आपके लोकेशन के, ब्लूटूथ, उसको आप बंद रखिए अगर वो यूज़ में नहीं है. अगर यूज़ में है, जैसे आपको ऊबर बुक करना है, देन यू कैन इनेबल दैट थिंग. आपका ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, यू कैन इनेबल, बट बाय द टाइम व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, सो ट्राई टू उसे बंद रखिए ताकि वो अननेसेसरी कहीं जा ना सके. और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको अगर सस्पिशियस लगता है तो उस प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट कीजिए. आप कहीं गूगल पे मत लिखिए कि कस्टमर केयर नंबर ऑफ समथिंग. आप इंस्टाग्राम में कोई आपका अकाउंट हैक हो गया है, कोई टेलीग्राम पे कुछ ऐसा, तो उस एप्लीकेशन में यू हैव ऑप्शन टू जस्ट क्लिक
help, or you can report or suspicious, then accordingly you can report. Don't search XYZ platform for the same thing. आपको doubt होता है, अफवाह होता है, you can check on Google, or you can report these things to the on the portal that is called cybercrime.gov. That is very important for the same thing, because nowadays we have seen various complaints just because of mobile platform, misuse of mobile platform. So netiquette, mobile parenting is very very important. Antivirus आप इंस्टॉल करिए, कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं, आप अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपका गैलरी, आपका फ़ोन ज़्यादा स्पेस ले रहा है, बट आप वेरीफाई ज़रूर कीजिए कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं. थर्ड पार्टी के अलावा जो हमने बताया, मॉड एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, यह साइलेंटली डेटा ले सकते हैं. तो आप ध्यान दीजिए कि हमें कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ नहीं करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत आजकल के बच्चे डाउनलोड करने के बाद गेम को अनइंस्टॉल कर देते हैं, सोचते हैं पेरेंट देख नहीं पाएंगे, पर उन्हें पता नहीं होता कि अगर वो शॉर्टर पीरियड के लिए भी डाउनलोड किया गया है और उस शॉर्टर पीरियड में अगर कॉन्टेक्ट चला गया है और बाद में फिर ये अनइंस्टॉल करने के बाद आप सोचते हैं कि मेरा डेटा, तो दैट इज़ वेरी, तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रंस और किड्स बेसिकली व्हाट they are browsing. Check the history exactly. It's very important at this moment, because this is a very fundamental thing where you have to take the precautions from this step basically. Absolutely, we have to be very careful, and parents need to monitor their kids and their children, you know, what they're doing on mobile applications, how they're using them, and what they're doing on their mobile phones, to be precise. And now we've reached the end of the session and we have to wrap it up. But before that, very quickly, I would like to tell you about the quiz contest. Yes, that's gonna happen. So, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस क्विज़ में, कैसे आप इन सेशंस को दोबारा देख सकते हैं और अपनी जो भी आपने लर्निंग की उसे रिफ़्रेश कर सकते हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं. सबसे पहले आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट ciet.nic.in पर. इसके बाद यू विल गो टू दिस टैब ऑफ इवेंट्स. आप इसके नीचे देख सकते हैं देयर आर वेरियस ऑप्शंस एंड यू हैव टू गो टू वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग. क्लिक ऑन दैट एंड अंडर दैट you will see different options, and you need to log on, or you need to click on the current activity. That is something that's happening currently, and we are providing you the training for Internet of Things and mobile security. That's the current training which is going on. It started on 4th of September, and today was day 4, where we talked about mobile security threats and safety measures. And you will learn everything about this training, the objectives, and who can participate. And let me tell you, everybody can participate in this quiz contest. What you need to do, just scroll down and you will see the procedure to participate. There is a scan. You can you can scan this thing, scan this image, or you can go to this link. And what else you can do after that, you know where these training sessions are happening online, and of course on PM eVidya channel. And then this quiz contest will be organized on the last day, and you can definitely log on at that time and you can click on the link. This will be updated at 5 p.m. on 8th of September. And if you score more than 70%, you will receive a certificate of participation on your registered email ID. And if you want to share your feedback, you want us to improve our sessions, or anything that you want to say, you can definitely write to us on training.helpdesk@ciet.nic.in, or you can call us on this number, which is 8800440559. And now we're running short of time, so we have to wind up this session very quickly. I would like to thank both my experts for coming in the studio and for giving us their valuable time and contributing so nicely to this very, very important training session. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So viewers, now it's time for me to tell you about the next session. That's gonna be Sahyog session. You'll be joining us shortly for the same. लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दें, जो बहुत important है आपके लिए जानने के लिए, और आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है. Yes, I'm talking about NCERT textbooks. आप ये टेक्स्ट बुक्स परचेज कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री. आप इनके ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं दीक्षा ऐप, ई पाठशाला और NCERT वेबसाइट से. सो मेक श्योर कि आप ये टेक्स्ट बुक्स जल्दी से जल्दी मंगवाएं, और आप जुड़े रहें हमारे साथ. और अब से कुछ ही देर में लेकर आएंगे आपके लिए सहयोग सेशन. तब तक के लिए नमस्कार.